कच्चा करेला। हेलो जुथाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मेरी थाली बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल। दाल विद कोचू एंड ये है कच्चा करेला, मिनी करेला वाला, और ये मेरा खीरा और ये पापड़। ठीक है, चलो खाना शुरू करते हैं दोस्तों। कुछ दिन से मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब चल रहा था, इसलिए मैं कल डालने वाली थी, लेकिन कल बनाने वाली थी मुकबंग, लेकिन बना नहीं पाया। सो आज स्टार्ट करते हैं। वेदर वैसे अच्छा है बहुत ज़्यादा। चलो, आप लोग सोच रहे होंगे मैं हर टाइम दाल दाल खाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद आता है। जब भी दाल बनाती हूँ तब जाके मैं मुकबंग बनाती हूँ, वरना बाकी दिन नहीं। सो फर्स्ट बाइट। ये मेरा कच्चा करेला। शॉर्टकट रास्ता आजमाया। या तो दोस्तों, मेरा भी खाना ख़त्म। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना, और मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूले। चलो मिलते हैं दूसरे मेरे ऐसे खाने के साथ, वीडियो के साथ। टाटा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर देना। दाल में आज थोड़ा नमक ज़्यादा था, इसलिए दाल में थोड़ा सूखा सूखा खाया। मुझे ज़्यादा नमक पसंद नहीं है। चलो बाय बाय।